Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Hello and welcome to this Tuesday's edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Vibhuti Mishra. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंच के ताजा अंक में आपका स्वागत है, जहां हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार की खबरें आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा भी करेंगे। चर्चा के लिए आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार दीप शिखा शिकरवार। दीप शिखा जी, नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार विभूति जी, धन्यवाद। सबसे पहले हेडलाइंस के साथ हैं हमारी सहयोगी अनुभा रोहतगी। Thank you, Vibhuti. RBI's Monetary Policy Committee's 3-day meeting begins in Mumbai to announce a bi-monthly policy on Thursday. Key domestic indices end on flat note in volatile session. Sensex closes at 62,599 points. Nifty settles below 18,600 level. And in the forex market, the rupee closes at 82 rupees and 61 paisa against the US dollar. द्विमासिक नीति पर चर्चा के लिए आरबीआई की 3 दिवसीय एमपीसी की बैठक मुंबई में आज से शुरू हुई। गुरुवार को बैठक के नतीजों की घोषणा होगी। उतार चढ़ाव के साथ घरेलू शेयर बाजार सपाट तौर पर बंद। सेंसेक्स 62,599 अंक के नीचे बंद। निफ्टी 18,600 स्तर के नीचे बंद और विदेशी मुद्रा बाजार में अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की कीमत रही 82 रुपये 61 पैसे। और सबसे अहम खबर आज की, द्विमासिक नीति पर चर्चा के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति की 3 दिवसीय बैठक आज मुंबई में शुरू हो गई है। बैठक के नतीजों की घोषणा गुरुवार को की जाएगी। एमपीसी खुदरा मुद्रास्फीति में 4.7% की गिरावट की पृष्ठभूमि में मिल रही है, जो 18 महीनों के बाद 5% से नीचे आ गई है। पिछली एमपीसी बैठक के बाद आरबीआई ने रेपो दर को 6.5% पर रखते हुए अपनी दर वृद्धि को रोक दी थी। जैसा कि आपको मालूम है कि 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की घोषणा के बाद यह एमपीसी की पहली बैठक है। तो दीप शिखा जी, आप इस बैठक को किस रूप में देखती हैं? देखिए, बहुत ही उम्मीदों और आशा से सहित ये बैठक को देखा जा रहा है। कुछ जो विशेषज्ञ, कुछ उद्योग जगत के लोग जो हैं, उनको ऐसी अपेक्षा है कि अब जो है रिजर्व बैंक को रेट जो है घटाने शुरू करनी चाहिए। लेकिन बहुत सारे विशेषज्ञों का ये मानना है कि ये आरबीआई के लिए एक बहुत ही कठिन फैसला होगा। बहुत सारी चीजें जो हैं, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं, ये बैठक जो है उसमें तय करेगी कि इंटरेस्ट रेट्स जो है इस समय बढ़ना चाहिए या ये पॉज घटना चाहिए या इस समय पॉज ही रहना चाहिए। हमने देखा है कि मुद्रास्फीति की दर जो है अप्रैल में घटी और रिजर्व बैंक गवर्नर ने कहा है कि मई में और भी घट सकती है। तो जब महंगाई पे लगाम की बात थी तो उस लिहाज से ये रिजर्व बैंक को अब कटौती शुरू कर देनी चाहिए। पर अगर आप देखें कि विश्व में जो स्थिति बन रही है, अगर अमेरिका को देखें या यूरोप को भी देखें, वहां पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने और बहुत ही कड़ाई वाला एक संदेश दिया है। अमेरिका को भी देखें तो वहां पे जो अर्थव्यवस्था में जिस तरह के आंकड़े आए पिछले हफ्ते, उस लिहाज से ऐसा लगता नहीं है कि वहां पे अभी ब्याज दरें पॉज रहेंगी या घटेंगी। तो उस लिहाज से रिजर्व बैंक के लिए एक बहुत ही कठिन फैसला होगा एक बैलेंस्ड व्यू लेना इस बैठक में। दीपशिखा, most of the people, most of the experts, analysts are talking about either a pause, which will they are expecting it to continue, or maybe, like you said, a small percentage talking about a cut, or rather, reducing the interest rate. But there is also, I was reading somewhere, and then some experts believe that if possible, RBI should consider announcing a cut in policy rates, even if a small one, because this would have a positive effect on sectors like, such as real estate. Would you agree with that? Like I said, Anupa, it is going to be a very tough call, and I think it is way too early from central bank's point of view to begin cutting rates now.
So I believe, and most of the experts believe, that it would be a pause rather than a cut, because, if you're seeing what's happening in the global markets, if you see what's happening in the currency markets, the dollar index, it has appreciated. So all these factors will need to be taken into consideration, before RBI goes in for a cut, and inflation's just begun to sort of slide downwards. There's a little bit of uncertainty, I would say, on account of monsoon, because we've heard IMD say there is a delay in monsoon. Yes. So I think RBI possibly would take a very thought out call, and it would be too early to sort of go in for a cut at this juncture, even a small one. Yeah, and it's not just that, the inflation rate that the RBI would be looking at, but there is also this whole thing about, the need to push economic growth. Right, that is also one of the points that the RBI would be deliberating upon. And given the fact that there is a slowdown in global economy right now, how important, or how, what kind of considerations, what are the factors that the RBI would be considering? See, definitely the first and the foremost is definitely inflation. What is happening in there? And the indications are, and as the governor hinted, that the May inflation numbers would be lower than April. So I think there is fair amount of confidence that the data on the inflation side is looking positive, and the downward slide has begun. In terms of growth, I think we've had good fourth quarter numbers. If you look at some of the high frequency indicators, there may be marginal dip in some of them. We've seen rail freight, we've seen some little bit of slide in passenger vehicles, but they still remain very good and robust, like the automobile sales overall. The other indicators, if you look at GST, of course there is a marginal dip, but it still remains very, very strong. So there seems to be some impact of what's happening in the global economy, but Indian economy seems to be holding out on its own, and I think that is a very positive indicator for RBI, and that obviously would go into considerations when it decides on whether to pause or whether to go in for a small cut at this juncture, which looks difficult. जैसा कि आपने कहा कि बड़ा एक उत्साहवर्धक रहा है, संतोषजनक रहा है, लेकिन जनता का भी ख्याल रखना है, देशवासियों का ख्याल रखना है। लेकिन जैसा कि उन्होंने कहा कि जो विदेश के जो बैंक हैं, कुछ बैंक वहां विफल भी हुए हैं, जर्मनी में मंदी है, तो क्या आरबीआई सब चीजों को देख रहा है? कैसे इसमें क्या समन्वय होगा? बिल्कुल, आरबीआई जो है ये सारे मुद्दों को भी नजर में लेगा कि विश्व में क्या हो रहा है, विश्व में और जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो क्या कर रहे हैं। तो अगर हम अमेरिका को देखें, वहां पे जो अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आया था, जॉब्स डेटा भी बहुत स्ट्रांग आया था, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी, जो इंडिकेटर्स मिल रहे हैं ग्लोबल इकोनॉमी के। यूरोप को अगर आप देखें तो यूरोप में मंदी का दौर है, लेकिन यूरोपियन वहां पर महंगाई से भी जूझ रहा है यूरोप। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक कह रहा है कि नहीं, अभी मैं बहुत रेट कट पे उनका जो स्टैंड है वो बहुत हॉकिश स्टैंड है, जिसको हम कहते हैं। तो जो इंडिकेटर्स ग्लोबली नजर आ रहे हैं, आरबीआई उनको पूरी तौर से लेगा अपने कंसिडरेशन में डिसीजन लेने में, क्योंकि एक और फैक्टर जो हमें ध्यान में रखना है कि रुपया जो है, रुपये पर भी, रुपये के मूवमेंट पर आरबीआई की खास नजर रहती है। और रुपया जो है, जो अमेरिका में हो रहा है या विश्व के बाजारों में हो रहा है, उसको लेकर के उसका मूवमेंट बहुत सेंसिटिव रहता है। तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये आरबीआई की जो एमपीसी की मीटिंग चल रही है 2 दिन की, इन सारे फैक्टर्स को रखा जाएगा मद्देनजर और उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाएगा। इसी बीच शेयर बाजार की बात कर लेते हैं। उतार चढ़ाव भरे सत्र में आज प्रमुख घरेलू सूचकांक सपाट नोट पर बंद हुए। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स 62,800 अंक से नीचे बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में निफ्टी 18,599 के स्तर के करीब बंद हुआ। सेंसेक्स 5 अंक या 0.01% चढ़कर 62,792 पर बंद हुआ। निफ्टी 5 अंक या 0.03% की बढ़त के साथ 18,594 पर बंद हुआ। बीएसई के व्यापक बाजार में मिड कैप इंडेक्स में 0.3% और स्मॉल कैप इंडेक्स में 0.4% की तेजी आई।
क्या लगता है आपको कि सेंसेक्स बाजार किस तरह रुख कर रहा है? पहले तो बड़े अच्छे थे, लेकिन थोड़ा सा पार्ट तौर पे जो आज जो भी दिखाई पड़ा है, उस पर क्या कहना है आपका? देखिए, बाजार जो है बहुत सेंसिटिव रहता है विश्व में जो भी हो रहा है, और आज अगर नजर डालें तो खास तौर से जो गिरावट आई है वो आईटी और टेक स्टॉक्स में आई है, और ये मतलब जो अमेरिका में हो रहा है अर्थव्यवस्था में, उसका असर सीधे तौर पे जो हमारी टेक इंडस्ट्री है उस पे नजर आ रहा है। उनके रेवेन्यूज भी, अगर हम रिजल्ट्स की बात करें तो उनके रिजल्ट्स पर भी उसका असर दिखा था, और वही चीज हमको स्टॉक्स में भी दिखाई दे रही है। तो अगर ओवरऑल देखें तो इंडस्ट्री वाइज तो मिक्स था, लेकिन इन जो स्टॉक्स पे बहुत ज्यादा असर हुआ, इन्होंने खींचा है उसको। और चूंकि अमेरिका विश्व के बाकी बाजारों में भी एक नर्वसनेस है कि अब क्या किया जाएगा, क्योंकि जो डेटा जिस तरह का आया था यूएस इकोनॉमी को लेकर के, अब यूएस फेड जो है वो क्या करेगा, किस दिशा में जाएगा, तो वो नर्वसनेस जो है बाजारों में दिखाई दे रही है, और वो हमारे यहाँ भी थोड़ी सी नजर आई। We'll discuss a little more about the stock market, but let me give you a little more details about what happened in the market today. Key domestic indices today ended on a flat note in the volatile session. The Sensex at the Bombay Stock Exchange settled below the 62,800 mark, while the Nifty at the National Stock Exchange ended close to the 18,599 level. The Sensex climbed 5 points or 0.01% to finish at 62,792. The Nifty advanced 5 points or 0.03% to end at 18,594. In the broader market at the BSE, the mid-cap index gained 0.3% and the small-cap index was up by 0.4%. In the Sensex index, which is a pack of 30 companies, shares of 17 firms appreciated while 13 depreciated. The top gainers include Ultratech, which inched up 2.9%, while Axis Bank jumped 1.9% and Kotak Mahindra jumped 1.8%. On the other hand, Infosys declined 1.8%, while Tech Mahindra fell 1.8% and TCS slipped to 1.9%. In sectoral indices at the BSE, 44 sectors logged gains while 12 witnessed losses. Deepshikha, do you think that the flat closing that we saw in the markets today is also in a way there was a wait and watch kind of stance in the markets because of the RBI meeting that is taking place? Definitely, Anupa, that is also one key aspect which sort of played on the market. But if you actually look at what's happened within the Sensex, now 17 shares have appreciated, 13 have depreciated. And most of the depreciation seen in, the sensitive stocks in terms of the tech. Yes. The gainers have definitely been, BFSI and cement infrastructure, stocks. So clearly those factors are playing out in terms of the stock market as well. While, the nervousness which is feeding into the market is coming from these immediate events which are happening, and this whole expectation around what will MPC do, and also what happens in the US market. Now, ECB is being very hawkish. They've given a very hawkish statement. What Fed does, which way does it go now with, unemployment data coming out the way it is and the job data remaining the way it is. So I think all these factors played on the market today, and probably the expectations building around the MPC, it's definitely, the build-up is whether it'll be a pause or, a minor cut. But having said that, the Indian markets have been performing relatively much better than, when you look at the global economy, look at the economies of the other, even US markets and all. So that being the case, some experts are also expecting both markets to reach their record highs in the coming days. What is your expectation of on that? So if you see in terms of the Indian economy is really standing out. And that is, I think, a big factor which probably market would take into consideration. The other factor is, there was this hope building up when it came to US markets, or that US Fed will probably, not go in for very sharper rate hikes. The data looked such, and then there were these incidents about the banking sector. So all these factors were sort of creating that kind of expectations, and they were also feeding the Indian stock market. But definitely
fundamentals of some of the sectors in India, which were not so impacted by what was happening in the global market, those obviously are doing well on the ground in the real economy, and that was showing in the stock market as well. And the stock markets are also, the movement of the stock markets is also to a large extent, is dependent on the FIIs, the FPIs. And in fact, we've seen that in the month of May, the FPI inflow in India has been nearly 44,000 crores, which is the highest in the last 9 months. What do you think are the factors that is, are contributing to this bullish trend in FPI inflows? So see, Indian market is definitely offering, it is standing out in the sense that the domestic industry is standing out, the whole economy is standing out. So that will show in the stock market, and the returns, the Indian stock market is definitely offering returns, good returns to the FPIs. So as an investment destination, India looks very attractive from outside if you see what's happening in the other markets. So it is really shining in that sense, which is what is leading to all the inflows that the markets got. And given the robust macro indicators that we have been getting in the past few months, do you expect the FPI inflows to, continue with this positive trend? The Indian economy is holding out. The macroeconomic indicators, if you see, some of the factors have really sort of stood out. The government should get the credit for actually keeping the macroeconomic balance. If you see, all the factors have been very, very cautiously managed. The government did not go in for, splurging, and the fiscal deficit has been kept in control. So all these macroeconomic factors definitely make India stand out as an economy, as an investment destination as a whole, and also if they look at the economy in terms of the market's performance and so on. So markets are definitely standing out. So and India looks attractive from overseas. तो रुपया की बात कर लेते हैं। विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 6 पैसे मजबूत होकर 82 रुपये 61 पैसे पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स दिन के कारोबार में 104.18 पर कारोबार कर रहा था। And let's see at what happened at the European and Asian markets today from Vibhuti. एशियाई बाजार मिले जुले परिणामों के साथ बंद हुए। जापान का निक्केई 0.9% उछला। सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.03% चढ़ गया और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% बढ़ा, जबकि चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 1.16% नीचे और हांगकांग का हैंग सेंग 0.05% गिर गया। यूरोपीय बाजार में अंतिम समाचार मिलने तक लंदन का फुट्सी 0.3% गिर गया, फ्रांस का कैक 0.2% गिर गया और जर्मनी का डैक्स 0.18% टूट गया। Moving on to the U.S. market, stocks on the Wall Street closed with a decline in all indices yesterday as U.S. equities edged lower after both tech and energy stocks erased earlier gains in subdued trading volume. The Nasdaq Composite Index was down by 0.09%, while the Dow Jones Industrial Average declined 0.59%. The S&P 500 fell 0.2%. As we were discussing earlier, Deepshikha, we have our own RBIs, of course. The meeting started today, and the US Fed is going to meet on the 13th and 14th June. So clearly all that is weighing on the US markets as well. Definitely. What is happening there, the expectations and the nervousness around which way will the Fed go, and the data didn't help much. So there is this build-up that, Fed may continue to remain hawkish. The stance may not change, as was expected earlier. So there is this uncertainty around Fed's decision earlier on, and which is playing on the markets, on the sentiments overall, and which we saw today in terms of the fall. What is your expectation from Jerome Powell now? Again, like we said, so far they've had a very hawkish stance, and like you said, the data coming out from the US in the last couple of weeks has been, indicates that maybe, do you think the hawkish stance would continue, or do you think they, like RBI, the Jerome Powell may also go in for a pause?
So, if you actually look at the data and if you actually see what was happening, the fear factor or, the apprehensions around the banking crisis, which had suddenly sort of shown up, and there were concerns raised, and then there was this expectation, and there were statements from the Fed also indicating that they may not go in for such sharper, or faster, rate hikes. So, as per the data now, it looks, and there is a lot of apprehension that the Fed may actually sort of move on to a more hawkish stance, because the key concern still remains containing inflation. So, and I think that has fed on to on the markets today. That nervousness is building up till the Fed meeting. So that is essentially largely the apprehension which is building around. And Fed definitely, if you look at their stance, the change in stance, it looks very difficult at this juncture. जी, रुपया आज मजबूत हुआ है 6 पैसे के करीब। तो ये देखिए कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, चीन बड़ी अर्थव्यवस्था है, हमने यूके का हाल देखा, हम जर्मनी में देख रहे हैं मंदी है, पड़ोसी देशों का हाल हम देख रहे हैं, उसके बावजूद भी भारत एक संतोषजनक स्थिति में रहा है अपने आप को। क्या लगता है आपको? भारत की अर्थव्यवस्था में अगर आप देखें तो अभी तक अगर आंकड़े जो हमें नजर आ रहे हैं, अगर हम 4th क्वार्टर देखें पिछले साल का, तो जो आशा थी उससे बहुत बेहतर आंकड़े आए, जीडीपी नंबर्स बहुत बेहतर थे। उसके अलावा अगर अप्रैल और मई के आंकड़े अगर आप देखें, चाहे गाड़ियों का सेल देखें, जीएसटी के आंकड़े देखें, जीएसटी कलेक्शन के, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखें, तो हालांकि थोड़ा सा करेक्शन, थोड़ा सा डिप आया आंकड़ों में अप्रैल के मुकाबले, लेकिन फिर भी आंकड़े बहुत अच्छे आए हैं। तो ग्लोबल जो अर्थव्यवस्था है, विश्व की जो अर्थव्यवस्था है, उसका थोड़ा असर ऐसा लग रहा है कि आ रहा है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था अभी भी बहुत ही मजबूती के तौर पर खड़ी हुई है। और इस लिहाज से ये सारे जो फैक्टर्स, जो आंकड़े हमें नजर दिखा रहे हैं, हम चाहे पैसेंजर व्हीकल गाड़ियों की सेल्स देख लें, चाहे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन देखें, या अगर हम फ्रेट मूवमेंट देखें, रेलवे फ्रेट में थोड़ा सा ऐसा लगा कि डिप आया है, तो लग रहा है कि जैसे थोड़ा मॉडरेशन जैसी की आशंका व्यक्त की जा रही थी कि थोड़ा मॉडरेशन होगा, लेकिन अर्थव्यवस्था जो है हमारी, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो ग्रो करेगी। तो वो जो ग्रोथ हमारे यहाँ दिखाई दे रही है वो किसी और देश में दिखाई नहीं दे रही है। तो इसलिए भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक स्टैंड आउट करती है। जी जी, आप जैसे आर्थिक जानकार ही कहते हैं कि जैसे कोरोना के समय जो शेयर मार्केट है वो 26,000 के आसपास था, 5 साल का ट्रेंड देखें तो 36,000 था। ट्रेंड ये भी कह रहा है कि ये आगामी 5 साल में 1 लाख तक पहुंच सकता है। अगर बहुत पीछे जाएं तो जापान में 78 में उनका जो उनकी इकोनॉमी थी और जो यूएस की थी वो बहुत बढ़ी, मतलब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 26-27 तक 5 लाख करोड़ डॉलर की इकोनॉमी हमारी हो सकती है। बिल्कुल, देखिए कोशिश जो है बहुत सारी नीतियां बनाई गई कि देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से मजबूत किया जा सके। कोविड के दौरान भी हमने देखा कि सरकार जो है आत्मनिर्भर पैकेजेस लेकर आई थी। उन पैकेजेस में भी बहुत सारे नीतिगत फैसले थे, बहुत सारी नीतियां लाई गई थी, जैसे पीएलआई स्कीम्स लाई गई, तो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, निवेश को देश में किस तरह से बढ़ाया जा सके। तो इस तरह की जो नीतियां लाई गई हैं, अब गति शक्ति लाया गया है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और लॉजिस्टिक्स का जो क्षेत्र है उसको किस तरह से हम बढ़ावा दे सकते हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था जो हमारी बढ़ रही है, जो हमारी ग्रोथ हो रही है, जो हमारा विकास हो रहा है अर्थव्यवस्था का, उसको सपोर्ट करने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर तो चाहिए, ढांचा तो चाहिए, लॉजिस्टिक्स का सपोर्ट चाहिए। तो उसको किस तरह से खड़ा किया, उसमें किस तरह से निवेश बढ़ाया जाए, उसे किस तरह से खड़ा किया जाए। तो ये जितने आप देख रहे हैं कि नीतियां लाई गई हैं और इस तरह के जो फैसले लिए गए हैं, इनका असर तो कुछ समय बाद आपको दिखाई देगा अर्थव्यवस्था पर, क्योंकि निवेश आ रहा है, लेकिन उसका 1, 2, 3 साल तो लगता है वो अपना
रिजल्ट दिखाने में, ट्रेंड, बिल्कुल जो बाजार के ट्रेंड्स हैं उसके अनुसार। तो बाजार के ट्रेंड भी, जो अर्थव्यवस्था आपको दिख रही है विश्व में अलग, बिल्कुल बोलते हैं कि इंडिया इज अ शाइनिंग स्पॉट। तो अगर आप बाकी देशों की अर्थव्यवस्था देखें तो वहां तो बहुत ही ग्लूमी सा माहौल है, बहुत लग रहा है कि सब जगह गिरावट की बातें हो रही है, ग्रोथ जो है उतनी नहीं हो रही है जितनी भारत में हो रही है। तो जाहिर सी बात है कि भारतीय स्टॉक मार्केट जो है उसी लिहाज से जैसे अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उस लिहाज से भारतीय स्टॉक मार्केट का भी उसी में बढ़ोतरी होगी। Let's move on to commodities. Oil prices tumbled more than $1 a barrel on Tuesday after a strong rally in the previous session, as worries about global economic growth outweighed Saudi Arabia's pledge to deepen output cuts. The U.S. Energy Information Administration is due to release its short-term energy outlook on Tuesday afternoon, while China's May trade data on Wednesday will give fresh demand indications for the world's second largest oil consumer. In intraday trade, Brent crude was trading at $75.38 a barrel. West Texas Intermediate crude price was at $70.76 cents per barrel when reports last came in. Deepshikha, Sunday there was an OPEC Plus meeting, and following that meeting, Saudi Arabia has now voluntarily announced a 1 million barrel per day cut. Now, given the fact that there is already a slowdown in the global economy, and with, of course, Saudi Arabia has taken this, step to prop up the oil prices. But how is it going to, affect the overall global economy? Anubha, if you see, Saudi's announcement has not really sort of impacted the market in the way they were expecting it to impact. We saw a temporary increase, but the concerns of what is happening in the Western economy is really weighing on, the prices, and which will probably weigh on going forward till, we see some bright light, some coming out of these economies. So the concerns there are manifold in these economies. They are really grappling with growth and inflation both at this juncture. So in terms of oil, I think it remains, I don't see that, the attempts by, members of the OPEC, even unilateral members, are going to have a tremendous impact on the oil prices. The kind of, although it is very difficult to sort of predict oil prices, but it doesn't look like, because the concerns are really weighing down. Coming to India now, there were some expectations, and now that we are at a comfortable, international oil prices are at a comfortable level. So that may reflect in pump prices here in India, and, since obviously they've been on pause for the last so many months. But I don't think, the Indian consumers, I think, are in for a disappointment given Saudi Arabia's latest step. Well, you see the movement of the oil, it is remaining very wobbly at this juncture, and whether this gets translated into prices at the pumps, we'll have to see going forward, how Brent behaves and so on and so forth, and whether, the oil companies are in a position to pass on these cuts. समय की कमी है, जल्दी से सोना का हाल जान लेते हैं। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के अनुबंध के लिए सोने की कीमतों में आज 168 रुपये की तेजी आई। सोना 60,016 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। जुलाई अनुबंध के लिए अंतिम समाचार मिलने तक चांदी 448 रुपये बढ़कर 72,320 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई। वैश्विक बाजारों में न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना $1,963 और 99 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रहा था। चांदी दिन के कारोबार में लगभग $23 और 64 सेंट प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी। And the studio clock is now telling us that time is now to wrap up the program. Thank you so much for coming on the program, Deepshikha, and Thank you, discussing the stories with us. And before we close, a reminder of the headlines. RBI's Monetary Policy Committee's 3-day meeting begins in Mumbai to announce a bi-monthly policy on Thursday. Key domestic indices end on a flat note in volatile session. Sensex closes at 62,599 points. Nifty settles below the 18,600 level. And in the forex market, the rupee closes at 82 rupees and 61 paisa against the US dollar. That's all in this edition of Market Mantra. We will be back tomorrow with the latest from the world of economics, business and finance. Tomorrow at 6:30 p.m. Do join us then. Till then, from the entire team of Market Mantra, Namaskar. Namaskar. Market Mantra.